Alright, good morning students. Today we're going to start a new chapter in history chapter 8. We are on part 1 of tourism and history. Our objective for today is students will be able to define tourism and take notes on prominent travelers in history. आज हम क्या करेंगे? आज हम tourism का जो concept है उसको define करेंगे and take notes on prominent travelers in history. हिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे फेमस ट्रैवलर्स थे, कौन कौन से ऐसे बड़े ट्रैवलर्स थे जिन्होंने दुनिया भर का टूरिज्म किया है और उनके बारे में लिखा है, उसके बारे में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर की है. ऑलराइट, वी आर गोइंग टू टेक नोट्स ऑन देम. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, व्हाट एग्जैक्टली आर वी लर्निंग टुडे? वी आर गोइंग टू बी लर्निंग अबाउट टूरिज्म और फिर वी आर लर्निंग अबाउट अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स. ऑलराइट, द फर्स्ट वन इज बेंजामिन ऑफ टुडेला, then there's Marco Polo, then there's Ibn Battuta, then there's Gerardus Mercator and Thomas Cook. All right, these are the different things that we are learning today. Students, keep a pen and notebook ready. You have to take notes for this class. Once I finish the explanation, then you pause the video and take the notes. All right, so first let's move on to the definition of tourism. Tourism क्या है? लेकिन उसके पहले let's look at the history of traveling. Okay, now the tradition of traveling has been carried out in India since hundreds of years. All right, people traveled in a pilgrimage to get education in ancient cities, trade, etc. लोग इंडिया में बहुत हज़ारों साल से 100 सालों से ट्रैवल करते आ रहे हैं. ऑल राइट, हज़ारों 100 सालों से ट्रैवल करते आ रहे हैं. एंड पीपल इज टू ट्रैवल इन अ पिलग्रिमेज. पिलग्रिमेज यानी क्या? इसका मतलब क्या है कि वो लोग रिलीजन के लिए ट्रैवल करते थे. जैसे हम मक्का मदीना जाएंगे या हम केदारनाथ कैलाशनाथ जाएंगे. ऑल राइट, क्रिश्चियन लोग इजिप्ट में जाएंगे, इज़राइल में जाएंगे, जेरूसलम में जाएंगे. ऑल राइट, सो पीपल यूज्ड टू ट्रैवल इन अ पिलग्रिमेज. फिर वो लोग एजुकेशन के लिए भी ट्रैवल करते थे कि अच्छा मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं यहाँ से दिल्ली चला जाता हूँ, बिकॉज दिल्ली हैड अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़. या फिर मुझे पढ़ाई करनी है, मैं साउथ की तरफ जाता हूँ, वहाँ पे भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होते थे. ऑल राइट, सो पिलग्रिमेज, एजुकेशन एंड ट्रेड. ट्रेड वॉज एन एक्टिविटी दैट वाज ऑलवेज इंक्रीजिंग सिंस एंशिएंट टाइम्स. हर किसी को ट्रेड करना था, पैसे बढ़ाना था, अपने इकोनॉमी को बढ़ाना था. सो पीपल यूज्ड टू ट्रैवल फॉर दीज 3 रीजन्स. तो टूरिज्म एग्जैक्टली क्या है? टूरिज्म इज द एक्शन ऑफ ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट प्लेसेस विद अ स्पेसिफिक पर्पस. जैसे हमने लास्ट टाइम 9th में भी पढ़ा था, टूरिज्म क्या है? इज द एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग, इज द एक्ट ऑफ गोइंग टू अ डिस्टेंट प्लेस. यहाँ से साकिनाका जाना या साकिनाका से अंधेरी जाना इज नॉट कंसिडर्ड टूरिज्म. ऑल राइट, इट्स टूरिज्म इज ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट प्लेसेस. डिस्टेंट यानी थोड़े दूर दूर के जगह, थोड़े फार अवे प्लेसेस विद अ स्पेसिफिक पर्पस. किसी एक पर्पस से जाना, किसी एक वजह से जाना. ऑल राइट, वो किस वजह से जा रहे हो? फॉर एग्जाम्पल बिजनेस के लिए जा सकते हो. प्लेजर, घूमने फिरने, खुद को आराम दिलाने के लिए, माइंड को फ्रेश करने के लिए जा सकते हो. एजुकेशन, पढ़ने के लिए जा सकते हो, एक्सेट्रा. ऑल राइट, देयर आर मेनी सच पर्पसेस, बट रिमेंबर टूरिज्म इज द एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट प्लेसेस, फार अवे प्लेसेस विद अ पर्पस. ऑल राइट, स्टूडेंट्स, यू मे पॉज द वीडियो नाउ एंड टेक down the notes. All right, before moving on to the next topic. Beginning with the first traveler, we have Benjamin of Tudela. All right, now Benjamin of Tudela is known as the first European traveler. He was born in Spain. All right, वो स्पेन में born हुआ था Benjamin Tudela, and he is known as the first European traveler. यूरोप में ट्रैवल करने वाला पहला यही इंसान था. From 1159 to 1173 CE, he traveled to places like France, Germany, Italy, Greece, Syria, Arabia, Egypt, Iraq, Persia, India and China. So between that period of time, between 1159 and 1173 CE क्या है? Common era. All right, he traveled to so many places like France, Germany, Italy, Greece, Syria, Arabia, Egypt, Iraq, Persia, India and China. All right, and third point, he maintained his travel accounts in a diary, which are important historical documents. As you can see in the picture also, in this painting of his, उसके हाथ में एक डायरी है. All right, and Benjamin of Tudela क्या करता थे? He used to write about all his travel, उसके experiences, who the people he met, वहाँ का social life कैसा है, cultural life कैसा है, अलग अलग जगहों का, in his diary. And even today, what his diaries are found and they are kept as historical documents. कि अच्छा हिस्ट्री के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है ये. इफ यू आर वंडरिंग स्टूडेंट्स, ऑफ टुडेला क्यों बोलते हैं इसको? बेंजामिन ऑफ टुडेला, टुडेला एक नाम का जगह है, एक जगह का नाम है. ऑल राइट,
So that's why he's known as Benjamin of Tudela. Okay. Now, next one we have Marco Polo. All right. Marco Polo was an Italian traveler of the 13th century. 13th century यानी 13वीं सदी का traveler था. He introduced Asia, especially China, to the world. He stayed in China for 17 years. All right. तो मार्को पोलो ने क्या किया? He was an Italian traveler और इटली से आया था वो. And he introduced Asia to the rest of the world. एशियन कॉन्टिनेंट में जितने भी जगह थे उसने या उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया. कैसे दिखाया? अपने ट्रैवल के थ्रू. ऑलराइट, if you can see the map behind him, those are a few of the places he traveled all around Asia. मलेशिया, इंडिया के आसपास पहुंच गया था वो. उसने बहुत बड़ा चाइना में भी गया था, वियतनाम में गया था, मलेशिया. ऑलराइट, सो during that time he made an account of all the flora, fauna, social life, culture and trade system of Asia. China में especially he stayed for 17 years. और उन 17 सालों में what did he do? He made an account of all the flora, fauna, social life, culture and trade systems of Asia. Alright, this was the information about Marco Polo. Now Ibn Battuta. Alright, Ibn Battuta was a traveler in the 14th century. He took the world on a virtual tour of the Islamic world with his travel accounts. All right. Ibn Battuta traveler थे 14th century में, 14वीं सदी में. All right. And what did he do? He basically wrote a lot about his travels. All right. He wrote a lot about his travels. उसने बहुत सारे travel accounts लिखे हैं, वो जहाँ पे भी गया है. All right. And especially वो कहाँ पे गया? Islamic countries में, जहाँ पे ज़्यादातर इस्लाम फॉलो होता है. Alright, इस्लाम है जो रिलीजन है वो फॉलो होता है. सो ही ट्रैवल्ड इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज एंड ही गेव द वर्ल्ड अ आइडिया और अ पिक्चर कि अच्छा इस्लामिक वर्ल्ड में ऐसे लोग रहते हैं, ऐसा उनका सोशल लाइफ होता है, ऐसा कल्चर होता है उनका. ऑलराइट, ही ट्रैवल्ड फॉर 30 years एंड हैड रिजॉल्व टू नॉट ट्रैवल ऑन द सेम रूट ट्वाइस. उन्होंने कैसे ट्रैवल किया? ही कंटिन्यूसली ट्रैवल्ड फॉर 30 years एंड हैड रिजॉल्व नॉट टू यूज द सेम रूट ट्वाइस. सेम जगह पे वो 2 बार नहीं आएगा. Alright, he continued traveling in a line. Alright, and ensure that he's in a new place every time. Alright, Ibn Battuta is considered to be one of the most famous travelers. Alright, who said to have traveled around 117,000 kilometers. Alright, Marco Polo ने 12,000 किया होगा और कुछ लोगों ने 17,000 किया होगा. Ibn Battuta did around 117,000 kilometers. Alright, which is a lot. His accounts are useful in understanding the social life and history of the medieval world. 14वीं सदी मतलब medieval period चल रहा था उस समय पे human history में. And because he had traveled so much and he had not only traveled to Islamic countries but he had traveled to China, he had traveled to India, he had traveled to a lot of other countries. His work is considered to be useful in studying medieval history. Medieval history पढ़ने के लिए तुम्हें इब्न बतूता के travels के बारे में पढ़ना ज़रूरी है. Alright. Next we have Gerardus Mercator. Alright, Gerardus Mercator was a cartographer of the 16th century. 16वीं सदी में. Alright, we are in the 21st century. Alright, हम लोग 21st century में हैं. Gerardus Mercator was a cartographer of the 16th century. यानी 16वीं सदी में वो cartographer थे. Cartographer है क्या exactly? जो maps बनाते हैं, जो globes बनाते हैं, उनको cartographer बोलते हैं. Alright, someone who travels all across the world and makes a map of it. Okay, he's known for creating a world map and the globe of the earth. All right, Gerardus Mercator ने क्या किया? He is known for creating a world map. उन्होंने world का एक पूरा map draw किया and he also made a globe of the earth. All right, you can see in the picture also he's measuring he's measuring the globe using an instrument. All right, his work had a great impact on the way navigation was carried out around the world. उसके काम की वजह से क्या हुआ है कि दुनिया भर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है कि अच्छा नेविगेशन किस तरह से करना है. उसके मैप की वजह से लोगों ने ट्रैवल करने में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए. फॉर एग्जांपल उसके मैप के हिसाब से ये वाला रास्ता बेटर है या ये वाला रास्ता ईजियर है, तो लोग उसके हिसाब से जाने लग गए. ऑलराइट, एंड हिज वर्क वाज स्पेशली यूजफुल फॉर नेविगेशन यानी अपना रास्ता ढूंढना, टू फाइंड योर डायरेक्शन टू योर डेस्टिनेशन. ओके, to find your direction to the place you want to go. Okay,
So that was all about Gerardus Mercator. All right. And finally, we have Thomas Cook. All right. In the latter half of the 19th century's Common Era, Thomas Cook made noteworthy contributions to tourism history. थॉमस कुक नाम का एक इंसान था, आदमी था. ऑलराइट. एंड इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी यानी 19th सेंचुरी के एंड के आसपास, he contributed a lot to tourism history. कैसे? Now, he organized a trip by railway from Leicester to Loughborough for around 600 people. Leicester to Loughborough, alright? So he organized a railway trip from one city to another, alright? For around 600 people, alright? उस समय पे खुद ही अकेले ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल था और उसने 600 लोगों के लिए ये अरेंज करवाया, alright? So that was a very big thing back then, alright? He also organized a round trip around Europe, alright? उसने यूरोप के आसपास भी पूरा राउंड ट्रिप भी प्लान किया था around that time, alright? He then established a travel agency selling tourist tickets, which opened up the doors of modern tourism. Modern tourism, आजकल का घूमना फिरना, फ्लाइट्स, बसेस, ट्रेन, ये सब कहाँ से शुरू हुआ? थॉमस कुक के इन्हीं टूरिस्ट कंपनी से शुरू हुआ. He had started a travel agency called Thomas Cook and Son, okay? और उसके थ्रू वो टूरिस्ट टिकट्स बेचते थे. टूरिस्ट टिकट्स क्या है कि इस टिकट के थ्रू तुम्हें ये सब मिलेगा, इस जगह पे ट्रैवल करने मिलेगा, इस जगह पे खाने और रहने मिलेगा. Alright, and it was a very famous company. In fact, as you can see in the second picture नीचे, this company grew and eventually दूसरे हाथों में भी चला गया. दूसरे कंपनीज ने थॉमस कुक को खरीद लिया and made it their own company. But उसका नाम उधर ही रह गया, कंपनी का नाम वही रह गया था, थॉमस कुक. ऑलराइट. एंड दे हैड अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट्स, इंटरनेशनल होटल्स एंड सब कुछ, सारे फैसिलिटीज उनके पास थे. अनफॉर्चुनेटली थॉमस कुक वाज अराउंड closing down around September of 2019. All right, it was a very sad thing because Thomas Cook was one of the oldest travel companies in the world. 1800s के end में, मतलब 19th century के end में, मतलब 1880 1890 इस year से September के 2019 तक चलना. That's almost around 200 years of existence. All right, which is a lot. Okay, almost 100-200 years of existence, which is a lot. All right. So Thomas Cook obviously contributed a lot to modern tourism. यानी आजकल का टूरिज्म जो है वो किसकी वजह से शुरू हुआ? थॉमस कुक की वजह से. With that, students, we've come to the end of our explanation. These are the questions I want you to answer for today. Write short notes on tradition of traveling. ट्रैवलिंग का जो ट्रेडिशन है ये कहाँ से शुरू हुआ, इंडिया में कैसे होता था, किसके लिए लोग करते थे. ऑल राइट, यू हैव टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दैट. एंड सेकंड शॉर्ट नोट इज ऑन मार्को पोलो. मार्को पोलो के पॉइंट्स यूज करके उसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखो. ऑलराइट, सो ट्राई टू राइट इट इन योर ओन वर्ड स्टूडेंट्स. पॉइंट्स मैंने तुम्हें दिए हैं डेफिनेटली, लेकिन सिर्फ पॉइंट्स को कॉपी पेस्ट मत करना. कॉपी पेस्ट करना है तो वो तो ईजी काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा और तुम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो कहीं से, शायद गूगल से 1-2 पॉइंट ढूंढ के, या मार्को पोलो के बारे में थोड़ा और पढ़ के. इफ यू कैन ऐड 1 or 2 more points, I think that would be a very wonderful thing to see today. All right, so students, with that we have reached the end of our lecture. Thank you so much for learning. If you have any doubts, reach out to me on WhatsApp. You can send me a voice note or a message and I will answer your doubts. All right, so have a nice day all of you,